डॉक्टर शिवन जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चंद्रयान-II मिशन के सफल लॉन्च पर आपको और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सफल लॉन्च पूरे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। पिछले सप्ताह तकनीकी कारणों से लॉन्च स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद आपने और इसरो की टीम ने बहुत तत्परता से तकनीकी खराबी का पता लगाया और उसे हल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए, और अब एक हफ्ते के भीतर ही लॉन्च में सफलता हासिल की है। इसके लिए आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं। यह एक शानदार उदाहरण है कि हमारे वैज्ञानिकों में सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिभा है, क्षमता है और आत्मविश्वास भी है। जितनी बड़ी चुनौती हो, थैंक यू सर। आपका इरादा उतना ही पक्का हो जाता है। क्या देख रही हो मेरी बच्ची? पापा चांद को देखो। जाना है आपको? कैसे होगा पापा चांद पे? मुझे देखना है। देखो बेटा, इंडिया चांद पे तो पहुंच चुका है। जब तक आप बड़े हो जाएंगे, शायद आप भी जा सकोगे। The moon, the spatial object that has captured hearts and imaginations for as long as we can remember. The key to our past and the way to the future. The world has always been fascinated with the moon, and we have paid our closest neighbor many visits over the past century. 1959, Soviet Union's Luna 2 was the first man-made object to reach the moon. 1966, Luna 9 made the first ever soft landing on the moon. And in July 1969, the world held its breath as Apollo 11 became the first manned mission to land on the moon. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Between 1969 and 1972, 24 people traveled to the moon, and 12 of them could come back to tell us what it was like to stand on new ground. And as we watched all of this in awe, we knew we had to leave our mark too. On 22nd October 2008, India turned a new leaf in her space program. The Chandrayaan-I was launched. During its magnificent tenure, the mission reported a remarkable discovery. We found water on the moon, and nothing was ever going to be the same again. Chandrayaan-I gave science a whole new perspective, drawing attention and awards. But for us, the journey had just begun. It was our first step in exploring a world that explains our own. It was the start to answers mankind has always been asking. For over 10 years, thousands of people from across the country came together for one dream: India's next big expedition. We're all set. Are you?
Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. The sight and sound of the rocket liftoff from Sriharikota is always overwhelming and mesmerizing. Lot of things happen behind the scene for a successful launch. The integration of the launch vehicle happens over a period of 50 days. The activities are carried out 24/7, round the clock, in a highly synchronized manner, which is the hallmark of the resilience of Team ISRO. Favorable weather and wind conditions are a must for successful launch. Planning a launch requires accurate weather and wind profile modeling and prediction for the launch date. Ensuring safety at all work sites requires elaborate planning and assessment of accident risks. The liquid fuel is loaded in launch vehicle hours before the launch. Ensuring adequate supply and accurate loading requires careful monitoring of this activity. All activities before the launch till liftoff are controlled and monitored
by the mission control room, which has the systems to assess the flight data from the launch vehicle. Spent stages of the rocket are separated and fall back on the earth along the ground trace. Careful analysis is done to predict the impact location of these spent stages to prevent any mishaps. Just after the lift, the flight data are received using the ground-based radars at SIA, and this is how a successful launch is executed. We are built to go to the moon. Capturing the imagination of millions of Indians. To explore a new world, a new home. Chandrayaan-II is a 3-in-1 mission of ISRO. Born at the U.R. Rao Satellite Centre in Bengaluru. In addition to me, the orbiter, are my other 2 family members, a lander, Vikram, and a rover, Pragyan. My creators spent years of hard work to prepare me and my family for a mission of potential discoveries and challenges. We are all geared up for Chandrayaan-II. It opens up a new era of lunar exploration. 3, 2, 1, 0. Our journey to the moon will be on GSLV Mk III, the mightiest rocket ever built by India. Enabled by a powerful cryogenic stage, GSLV Mk III will inject us into a highly elliptical orbit around the Earth. As we approach the vicinity of the moon, we will be captured by its gravity. While my family detaches from me to softly land on the moon, I will keep a constant vigil on them from the top. Our plan is to explore the unexplored regions closer to the lunar South Pole. This mission will help us better understand the origin and evolution of the moon. There are many experiments we plan to conduct while dating the moon. This is the beginning to our quest to unravel the mysteries of the moon.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. Thanks for joining us here on France 24 this hour. I'm Jeannie Godula in Paris. Well, we'll start first with this news out of India, and the country's space agency says it has just launched an unmanned spacecraft to the far side of the moon. That successful launch coming a week after a technical snag delayed liftoff, as Delana D'Souza reports. After a week-long delay due to a fuel leak, scientists at the Indian Space Research Organization say they're ready to take 1 billion dreams to the moon. The country plans on becoming the fourth in the world, behind the United States, Russia and China, to land a lunar spacecraft. Dubbed Moon Chariot in Hindi, the Chandrayaan-II is built almost entirely in India. At $140 million, it costs a fraction of similar missions by other countries. The spacecraft's orbiter is set to circle the moon, imaging its surface and studying the atmosphere, while the rover will carry out experiments while controlled by scientists in India. The country's space program is a source of immense national pride, and the Prime Minister has outlined an ambitious plan to send a crewed mission to space in the next 3 years. When we will have been independent for 75 years, or even before then, a son or a daughter of India, it could be anyone, will go to space. Monday's launch comes over a decade after India's first mission orbited the moon and searched for water back in 2008. Welcome back to GMT. India is about to reattempt the launch of its second lunar mission, a week after it halted the scheduled blast-off due to a technical snag. India's space agency hopes that Chandrayaan-II, that means Moon Vehicle 2, will be the first to land on the little-explored south pole of the moon. The mission will focus on the lunar surface, searching for water and minerals and measuring moonquakes. Well, we do have some live pictures coming to us now from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota Island as the countdown for liftoff is underway. Let's just listen in. To launch, the excitement building up here on your screens, the close shot of the base
where you will see shortly the S-200s igniting on the ground. Minus 20 seconds. Minus 18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए, अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ देर के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले भारतीय रॉकेट रोकन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। Seems like a successful attempt there to launch the second lunar mission in a week for India after it halted the scheduled blast-off due to a technical snag. And India's space agency saying that the spacecraft will be taking 1 billion dreams to the moon, now stronger than ever before. They're really hoping that the Chandrayaan-II will be the first to land on the moon's south pole. It's a big mission worth about 150 million India's space agency has spent so far, and India bidding to become just the fourth nation, Russia of course, the United States, China, to have landed a spacecraft on the moon. So a big moment and a proud moment for India. Thousands of people have gathered there at the launch site to witness this attempt. Lots of people, dignitaries, school children as well there, and this has been carried of course live on television across India too. So a big moment, and I think it's been a successful one from what we can tell. India launching the Chandrayaan-II, it means moon vehicle 2, hoping it will be the first to land on the little explored south pole of the moon. Where the L110 ignition will happen. DW News coming to you live from Berlin. India is off to the moon as the Chandrayaan-II rocket successfully lifts off. 3, 2, 1, 0. The unmanned spacecraft. Hello and a very warm welcome to you. I'm Amrita Chima. India has successfully launched an unmanned spacecraft to the far side of the moon. The Chandrayaan-II took off from the Satish Dhawan Space Centre to cheers from thousands of onlookers. The launch had been delayed a week due to a technical glitch. The Chandrayaan-II carries an orbiter, lander and rover. It will travel for 2 months before the lander, Vikram, touches down on the moon's surface near its south pole. A robotic rover, Pragyan, will then spend 14 days collecting a mineral and chemical samples for analysis. The mission is a major step for India's efforts to become a space superpower. Up to now, only the United States, Russia and China have landed spacecraft on the moon. Is now under closed-loop guidance. Joining me now from Delhi is Rajeshwari Pillai Rajagopalan. She's the head of the Nuclear and Space Policy Initiative at the Observer Research Foundation. That's a think tank based in the Indian capital. Welcome, Rajeshwari. A big moment for India and its space program. What did you feel when you saw Chandrayaan-II lift off today? No, I think this has been an exciting moment, not just for ISRO, the Indian Space Research Organization, India as a whole, but also for the whole world. This has become such a prestigious moment because there has been a global attention ever since US President Trump came into office. He talked about going back to the moon. There have been other countries such as India, Russia, China and Japan who have been trying to go back to the moon. The moon mission, China has undertaken a couple of impressive measures there. It landed on the far side of the moon earlier this year in the beginning in January. 3 years ago, it landed on the near side of the moon. So there have been quite a bit of attention even with respect to the moon missions, but also broader outer space itself has seen quite a bit of interest. अच्छा नाज़रीन, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से
को कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। चलें जी, ये तो मजा का पहलू था, लेकिन तकलीफ भी होती है कि ऐसे मिनिस्टर्स ये कहते हैं नया पाकिस्तान बन गया। खासतौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर बात करें, तब्दीली का दावा करके आई गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान बनेगा। नए पाकिस्तान में मिनिस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। और मैं यहाँ आगे तनकीद करने से पहले हुकूमत को अभी बताता हूं जी, तहरीक टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल, कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। आईटी की प्रोडक्ट्स वाहिद होती हैं और इस पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है, हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड है। सबसे बड़ा मसला यहां पर यह है कि आईटी की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहां आधे लोग बोलेंगे यार यहां पर तो गटर खुले हुए हैं, यहां गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है।